So hello everyone. So this is the question from Gate Instrumentation branch, and here this op-amp is given as an ideal op-amp, and we have to calculate the value of this output voltage V0. The interesting part of this question is both the feedbacks are present in this circuit. As we can see here, this is the negative feedback along the inverting terminal, and the positive feedback is also present at the non-inverting terminal. So whenever in the op-amp circuit both the feedbacks are present, we have to actually check it that which feedback is dominating. But in this question, the output saturation voltages of this op-amp are not given. जो यहाँ पर ऐसे होते हैं, this is the plus V set and minus V set, जो इस तरह से saturation voltages होते हैं op-amp में, वो यहाँ पर given ही नहीं है. So अगर यहाँ पर positive feedback dominating होता है, तो output voltage is always plus minus V set. So because the saturation voltages are not given, so we can't assume these voltages, right? So these are not present, so we can directly assume the negative feedback to be dominating in this question. We can directly assume and proceed according to that. So we can assume negative feedback to be dominating, and whenever negative feedback is dominating, it means the virtual ground theory is valid here. And मतलब ये मान के चल सकते हैं कि op-amp सैचुरेट तो नहीं होने जा रहा और लीनियर रीजन में op-amp है. बेसिकली लीनियर रीजन के अंदर op-amp है, और we have to proceed according to this concept only, virtual ground concept, right? But let's say we want to know that how to actually check it whenever both the feedbacks are present, that which feedback is dominating and which feedback is not dominating. So there's a procedure for that, and we have to follow this procedure only. So the first step is, first of all, we have to replace this output voltage by a small voltage delta V. This one, इससे बेसिकली रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर ये डेल्टा V से रिप्लेस करेंगे. नेक्स्ट स्टेप इज, जितने भी सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वी हैव टू रिमूव दैट इंडिपेंडेंट सोर्सेज फ्रॉम द सर्किट. मतलब जो वोल्टेज सोर्सेज हैं रिमूव करने का मीनिंग है कि वोल्टेज सोर्सेज है उनको तो भी शॉर्ट सर्किटेड, एंड जो करंट सोर्स है उनको सिंपली ओपन सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट. Now third step is जो inverting terminal, यहाँ पर जो ये inverting terminal का voltage है और this is the non-inverting terminal voltage, right? So we have to calculate actually inverting terminal voltages and non-inverting terminal voltage in terms of this delta V. And finally we have to compare it, that is the inverting terminal voltage non-inverting is greater than non-inverting terminal voltage. If it is true, so negative feedback is dominating. And if negative feedback is dominating, and if the non-inverting voltage is greater than inverting voltage, so the positive feedback is dominating. And if the positive feedback is dominating, the circuit behaves like a comparator circuit, and output of a comparator circuit is always plus minus V set. This is a fixed output voltage, and यही basically saturation voltage यहाँ पर given नहीं है, so that's why we can directly assume. So let's actually calculate this. What is the inverting terminal voltage and in terms of delta V. So basically यहाँ पर this is the inverting terminal voltage, this is the non-inverting terminal voltage. अब देखिए ये inverting terminal voltage तो क्लियर दिख रहा है कि V inverting minus 0 by 3R plus V inverting minus of ये बेसिकली डेल्टा V से रिप्लेस किया, तो V inverting minus of डेल्टा V डिवाइड बाय 3R. तो ये तो क्लियर है कि V inverting तो डेल्टा V अपॉन 2 है, राइट? नाउ इस सर्किट में अब ये एक स्टार नेटवर्क है आर, ये इस तरह से जो कनेक्शन है, दिस इज अ स्टार नेटवर्क, एंड वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस स्टार नेटवर्क इन डेल्टा फॉर्म. मतलब डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और व्हेनेवर द रेजिस्टर्स आर इक्वल, सो डेल्टा के अंदर ये सिंपली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है. सो दिस इज द 3R, ये कुछ इस तरह से रिप्लेस होगा, और यहाँ पर ये इस तरह से ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब इसी यही बेसिकली टर्मिनल है, सेम इज द 3R, एंड सिमिलरली यहाँ पर ये 3R. to make the calculation part easy actually, because otherwise यहाँ पर फिर एक voltage let करना पड़ता है और फिर वो calculation wise लंबी चीजें चली जाती है, इसलिए we can easily apply this, right? अब यहाँ पर we have to apply the KCL at, और ये basically अपने short circuit कर दिया अभी, right? This is the 0 volt, so KCL apply करेंगे. when we apply the KCL at
नॉन वर्टिंग टर्मिनल पे केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। सो अब देखिए यहाँ 3R भी लिखने की नीड नहीं है। वी इन्वर्टिंग माइनस 0 बाय 3R प्लस वी इन्वर्टिंग बाय 3R प्लस वी नॉन इन्वर्टिंग प्लस वी नॉन इन्वर्टिंग माइनस डेल्टा वी अपॉन 3R। so 3R तो पूरा डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, वी इन्वर्टिंग प्लस वी इन्वर्टिंग, राइट, एंड प्लस वी इन्वर्टिंग, so sorry, this is V non-inverting minus of delta V equal to 0. So 3 times of V non-inverting voltage is equals to delta V. So we can clearly see that V non-inverting is equals to delta V upon 3, right? और V inverting voltage जो था वो तो delta V by 2 था। तो अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट है कि inverting terminal is greater than non-inverting terminal. So नेगेटिव फीडबैक इज डोमिनेटिंग। और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ सैचुरेशन वोल्टेज गिवन भी होते तब भी नेगेटिव फीडबैक की वैल्यू होता है, बट अगर गिवन होते तो एक्चुअली वी हैव टू चेक लाइक दिस, बिकॉज तब तो चेक करना ही पड़ता। तो अभी तो डोमिनेटिंग, तो इस तरह से वी कैन प्रोसीड। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज। सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट अगेन, ड्रॉ दिस सर्किट अगेन। सो यहाँ पर ये सर्किट कुछ इस तरह से है। this is the 3R and this is 3R and this is also, yeah, now this is the output voltage, right, and inverting terminal, and यहाँ पर this is the non-inverting terminal 3R, and this is the 3R, this is 1 volt, and यहाँ पर जो हमने डेल्टा कन्वर्जन किया है उसी के थ्रू प्रोसीड करेंगे। दिस इज 3R, इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट होगा, दिस इज 3R, फिर एक रेजिस्टर यहाँ पर है, दिस इज 3R एंड वन रेजिस्टर इज हियर, दिस इज 3R, राइट, एंड यहाँ पर ये इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब देखिए इन्वर्टिंग टर्मिनल बिकॉज नेगेटिव फीडबैक वैलिड है, नेगेटिव फीडबैक इज वैलिड, मतलब वर्चुअल ग्राउंड जो है कंसेप्ट इज वैलिड, राइट। सो यहाँ पर भी इन्वर्टिंग टर्मिनल ही है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल तो अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज जो डेल्टा वी था, डेल्टा वी अपॉन 2। सो सिमिलरली वी नॉट के टर्म में दैट इज वी नॉट बाय 2, राइट, वी नॉट बाय 2 जाएगा, और वी नॉट बाय 2 ही यहाँ पर है। सो वी हैव टू अप्लाई द केसीएल एट दिस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो व्हेन यू अप्लाई द केसीएल एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो कि एक्चुअली इक्वल है वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग, दैट इज वी नॉट बाय 2, तो यहाँ पर you will apply the KCL. So V naught by 2, right? This is the V naught by 2 minus 1. अब again, there is no need to write this 3R because after all it will cancel out upon 3R, and plus यहाँ पर this is the V naught plus of V naught upon 2 minus of V naught divided by 3R, that is equal to 0. This will cancel बिकॉज यहाँ पर 0 के क्रॉस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द, अब ये कितना हो गया, वी नॉट प्लस वी नॉट बाय 2, दैट इज 3 वी नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ऑफ 1, एंड यहाँ से दिस इज द 3 वी नॉट इज इक्वल्स टू 2 वी नॉट प्लस ऑफ 2, सो वी नॉट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी नॉट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। सो इस तरह से वी कैन proceed. So this was the question, and basically ये procedure होता है whenever the both the feedbacks are present, and इस तरह से check कर सकते हैं। So ठीक है, okay, thank you.